we'll go through the last session. We did study bailment, and yet we are studying bailments. We have already seen these sections, but I'll repeat for your convenience. This is section 149 is the delivery to Bailee. Delivery to the Bailee may be made by doing anything which has the effect of putting the goods in the possession of the intended Bailee or any person authorized to hold them on his behalf. Then bailor's duties and liabilities. It's very important. Where there was a duty of Bailee that he has to disclose the faults. So there are certain duties of the bailor too. Bailor has also to disclose the faults. Now, at number 4, if you can see, bailor's duty to disclose fault in goods bailed. Section 150. Bailor is bound to disclose to the bailee fault in the goods bailed of which the bailor is aware and which materially interfere with the use of them or expose the bailee to extraordinary risk, and if he does not make such disclosure, he is responsible for the damage arising to the bailee directly from such fault. Now, if the goods are bailed for hire, the bailor is responsible for such damage, whether he was or not aware of the existence of such fault in the goods bailed. अब इसकी illustrations है. Illustration को देखिए जरा, बड़ा important है. For example, A lends a horse which is known to be vicious to B. He does not disclose the fact that the horse is vicious. The horse runs away. B is thrown and injured. A is responsible to B for damage sustained. उसे बताना चाहिए था कि ये मेरा घोड़ा जो मैं आपको दे रहा हूं ये भाग जाता है बहुत तेज रफ्तारी से, काबू नहीं आता, आपको इसको काबू करना है. तो उस वक्त बेली या उसके बिहाफ पे जो भी बंदा काम कर रहा था, एक्ट कर रहा था एज बेली, ही कुड हैव कंट्रोल्ड दिस और अपने आप को डैमेज करने से या इंजर करने से वो बच सकता था. बट चूंकि बेलर ने बताया नहीं, जो ही उस घोड़े के ऊपर बैठा, घोड़े ने दौड़ती मारी एंड जंप आउट किया और भाग गया. रिजल्ट क्या हुआ कि ही फेल डाउन, और उसके गिरने की वजह से जो उसको इंजरी आई, जो चोट आई, उसका डैमेजेस पे करेगा कौन? बेलर. नाउ द हॉर्स रन्स अवे, बी इज थ्रोन एंड इंजर्ड, ए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बी फॉर डैमेज सस्टेन्ड. अच्छा, बी एक दूसरी इसकी सूरत हाल ये भी है, ए हायर्स अ कैरेट of B. The carriage is unsafe, though B is not aware of it, and A is injured. Again, B is responsible. Now, it's very important. B, when he is giving something to Bailee or anybody acting on his behalf, B has the duty to know about the faults of the material. He did not know and he did not tell to the other person, but whatever the damage will be caused, that will be responsibility of the person giving that bailor. Now, care to be taken by Bailee. अब हम देखेंगे कि बेलर की जिम्मेदारी थी कि नुक्स बताए. अब उसने फॉल्ट बता दिया, नहीं बताया. Whatever his act was, he was responsible for the damage or the reward, whatever he was going to get. Now, section 151 says, care to be taken by Bailee. The person who is taking the material from bailor, he has certain duty to take care of the material. How will have he to care? This is section 151. Be with me and let's read together. In all cases of bailment, the bailee is bound to take as much care of the goods bailed to him as a man of ordinary prudence would.
Under similar circumstances, take of his own goods of the same bulk, quantity and value of the goods bailed. जिस तरह वो अपने माल की हिफाजत करता है या इसी तरह उसने अपना माल खरीदा होता तो वो अपने माल को जिस तरह लुक आफ्टर करता, इसी तरह जब बेलर ने उसको माल दिया तो ही इज रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर ऑफ द गुड्स. That is the importance of this section 151. I'll read it again. Is this a noise? Are you with me all? Yes, sir, we are with you. Sir. Yes, sir. Okay. Now, I'll read it again for your convenience, and we'll read today. Many sections will be a bit more faster. In all the cases of bailment, the bailee is bound to take as much care of the goods bailed to him as a man of ordinary prudence would, under similar circumstances taken on his goods of the same bulk, quantity, and value as the goods bailed. Now, bailee, when not liable, if bailee is liable for certain wrongs, the bailee would not be liable at certain points. When he would not be liable? Section 152 says that bailee, in the absence of any special contract, is not responsible for loss. It's very important now. If there is no contract, then bailee is exempted from any loss. Bailee, in the absence of any special contract, is not responsible for the loss, destruction, or deterioration of the thing bailed if he has taken the amount of care of it described in section 151. Now it's very important. Mr. A was the bailor. He hands over something to Mr. Bailee, that is Mr. B. B takes it away and he takes all the care of the goods. But despite of the goods were damaged. In that case, when he has taken all the care and the goods were damaged, he is not liable if any contract was not existing. So here we understand how much important is a contract. If there's no written contract or no contract between those, how much loss will be, how much liability will be, and everything is determined, and the part of performance of every person, party in the contract, they must know their specific part what they have to perform. And if he has no written contract, no contract between bailor, then he is not responsible for the damage given to them. But again, subject to if he has taken proper care of the goods. And if he didn't bother about the goods and he just let the things go ordinarily and reluctantly ignored them, and then in that case, if damage has occurred, he will be liable. So you have to distinguish these two things very specifically. Now, section 153 is very important. Termination of bailment by bailee. Termination of bailment by bailee's act inconsistent with the condition. Now, you can understand the meaning of this. If act of the bailee is inconsistent with the condition, condition is a term and condition, or condition is the condition of the goods. And if bailment bailment can be cancelled if bailee, he is inconsistent, he doesn't take care, he is reluctant, he is not responsible, then there are certain things which he is accountable for. We'll see this with the illustrations, with its examples. A contract of bailment is voidable. Now, I think you know already what is void, voidable, and lawful contract. Have you read it? Yes, sir. Yes, sir. Okay, that's good. That's very good. A contract of bailment is voidable
at the option of the bailor. Yeah, it's very important to understand. The contract of bailment is voidable at the option of the bailor if the bailee does any act with regard to the goods bailed inconsistent with the condition of the bailment. Now, bailment is a contract, and there were certain conditions imposed on the bailee, bailor, and whoever was acting on their behalf. But if the conduct of the bailee is inconsistent with the terms and conditions which you were imposing on him through the contract of bailment, then that bailment can be cancelled. Well, I gave you my horse. You took the horse to convey it to Mr. C, and the horse was not given food, horse was not given rest, and horse was not given due medical treatment if he did have any ailment or problem. That means you were bound under the contract of bailment to take care of the horse, given all rest, food, and medical treatment to my horse while taking it to Mr. C. You did not take care of it. That's why now you are responsible for this. And okay, I'll now put certain liability on you, but I hereby cancel your bailment. The bailment can be cancelled at the will and wish of who? Bailor. Now, bailor can say even this. Okay, this time I exempt you. This time I give you last warning, and you have taken my material, my horse, my goods from point A to point B, but you didn't take care. But next time be careful. This is the sweet will and wish of who? That is, anybody response? Hello? The conditions are at part of the bailor, na, to be followed by the bailor. Yes, this is bailor. That is a sweet wish and will of the bailor, whether he cancels or not. But uh, if the conditions are there and Bailee is to take care, he did not take care, in that case, it is a sweet wish of the bailor. Now, illustration is there, example is there. A lets to be for hire a horse for his own riding. B drives the horse in his carriage. This is at the option of a termination of the bailment. Here he is given a very simple example. I gave, for example, I am a bailor. I gave my horse to Mr. XYZ. You take this horse and ride on it. Have a good ride and come back. Or keep it with you for a week, learn riding, and after learning riding, return the horse after a week to me. What you do? You XYZ, after taking my horse, you take that to take that from me, but you put this horse in the carriage, tonga. And when you drive that tonga in the carriage by my horse, that you have committed breach of my contract of bailment. Then it depends on me whether I let your bailment agreement continue or I suspend that or cancel that. So that is voidable. Voidable means anything which can be voided. So void is totally illegal. Voidable, which is legal, lawful, but it can be unlawful anytime. And what is the lawful? That is always lawful. So these are three kinds of contract. So here this is voidable because of the conduct of the bailee. Now, liability of bailee making unauthorized of the use of the goods of bail. Now, here we have to see bailee who has misused my horse. What fine can be put on him? That was under section 153 that I can cancel the contract of
bailment. Okay, that's done. But the question is cancellation of the contract is enough for him to punish and to get recovery of your damages? No. So that's why Section 154 was promulgated. And under Section 154, if the bailee makes any use of the goods bailed which is not according to the conditions of the bailment, he is liable to make compensation to the bailor for any damage arising to the goods from or during such use to them. Are you with me? Are you understanding what I'm talking about? Yes, sir. Yes, sir. Oh, good. Very good. Yes, I'm sir. proud of you. I'm proud of you. All of you, I'm proud of you. You are very good students. MashaAllah. This is good, Thank you so much, sir. appreciable. Now there are Thank you, sir. welcome. Two examples. Examples are there. Those are on your screen. You can watch it, you can see it, and you can read it in my lectures on LMS anytime. But I'm reading for your convenience, and let's read together. A lends a horse to B for his own riding only. B allows C, a member of his family, to ride the horse. C rides with care, but the horse accidentally falls and is injured. B is liable to make compensation to A for the injury done to the horse. देखिए इसमें तमाशा क्या हुआ है कि मैंने कहा कि जी आप ले जाइए घोड़ा और इसको इस्तेमाल कीजिए और आप कंडीशन ये है कि आप इसे इस्तेमाल कर लेंगे राइडिंग के लिए और आपने ले जाके उसे राइडिंग नहीं किया बल्कि आपने अपने फैमिली मेंबर को कहा कि ठीक है आप भी राइडिंग करें आप ऑथराइज नहीं थे इस चीज की गो गलती आपके फैमिली मेंबर से नहीं हुई आपसे नहीं हुई कि घोड़ा जख्मी हुआ लेकिन घोड़ा इत्तेफाक से गिर गया मगर घोड़े का जितना इलाज खर्चा नुकसान होगा वो जिम्मेदार कौन है जिनको घोड़ा दिया गया फॉर राइडिंग उन्हें नहीं चाहिए था कि किसी दूसरे को देते और अगर वो खुद भी राइड कर रहे होते तो भी उनसे अगर घोड़ा जख्मी हो जाता तो देन ही वाज लायबल फॉर देन अनदर एग्जांपल टू द सेम A hires a horse in Dhaka from B expressly to march at 10 gale. A rides with due care but marches to Narayanganj instead. The horse accidentally falls and is injured. A is liable to make compensation to B for the injury. Now, ये बांग्लादेश के 3 शहरों का नाम लिया गया है और तीनों शहरों को समझ लीजिए आप पाकिस्तान के शहर 3 बना लीजिए कोई बना लीजिए लेकिन पहले मैं इसी को बात करता हूं ए ने घोड़ा लिया ढाका से ये इलस्ट्रेशन सी पढ़ रहा हूं मैं और एक्सप्रेसली किस लिए कि वो ले जाएगा टनगेल और वो टनगेल जाने की बजाय उसकी केयर तो करता रहा लेकिन टनगेल जाने की बजाय वो चला गया नारायणगंज वो एक और शहर तो नारायणगंज चला गया टनगेल जाने की बजाय तो क्या हुआ घोड़ा एक्सीडेंटली जख्मी हो गया गिर गया और जख्मी हो गया और याद रखिए जब हॉर्स चलता है और खासतौर पे पक्के सड़क पे या पक्के फर्श पे चले तो वो स्लिप होने के चांस ज्यादा होते हैं तो उसके गिरने के चांस भी ज्यादा होते हैं और ऐसी सूरत में जब वो गिरा तो उसका जितना भी नुकसान होगा वो देने का जिम्मेदार होगा कौन बेली टू द बेलर एंड सो इज अनदर एग्जांपल आपने यहां से गाड़ी ले ली मुझसे कि आप इस्लामाबाद से लाहौर चले जाइए और आप मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट भी हैं ज़हीन भी हैं और एनर्जी भी रखते हैं एम्बिशन भी हैं
और आप चाहते हैं कि ओके ठीक है एक दफा गाड़ी दे दें फिर मैं देखता हूं क्या करना है. You take my car. When it reaches to Bera and Pindi Bhattiya, instead of going to Lahore, you go to Faisalabad, then Multan, then onward to Sakkar and Karachi. You have taken my car from Islamabad to instead of Lahore to Karachi. So in that way, when you reached in Sakkar, in between Sakkar and Hyderabad, there is no motorway. Road was not safe. You met an accident. Who will be responsible then? It is you, the Bailee, who took the car, and despite you were driving carefully, but you are responsible for any damage, any loss, whatever occurs to uh, the car. Got the example now? Now Yes, there's sir. another term. Sir. Good, mashallah. If you respond, आपको मैं उर्दू में एक एग्जांपल देता हूँ कि जब एक आर्टिस्ट स्टेज पे आता है और वो लाइव आपको परफॉर्म करता है, वो चाहे जुगदे मारता है, चाहे वो रोना धोता है, चाहे वो डायलॉग बोलता है, तो जब आप आगे से उसको क्लैप करते हैं, ताली मारते हैं, तो वो इनकरेज होता है. मगर उस्ताद में और आर्टिस्ट में ये फर्क है कि उस्ताद का जब स्टूडेंट आगे से रिस्पॉन्ड कर देता है ऑन टाइम, तो उस्ताद को ये खुशी होती है कि मेरे स्टूडेंट माशाल्लाह दे आर टेकिंग केयर ऑफ द स्टूडेंट एंड द वर्ड्स व्हिच आई एम टॉकिंग. सो आई एक्सपेक्ट योर रिस्पॉन्स so frequently. Thank you very much. You respond. Now is सर ये क्वेश्चन है सर इन एग्जांपल्स में तो ये है कि अगर उसने मिस यूज किए सिर्फ तब वो उसके डैमेजेस पे कर रहे हैं. अगर फर्ज करें उसने जिस तरह एग्जांपल ए में उसने खुद ही हॉर्स राइड किया होता तो उसने मिस यूज नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद अगर गिरने पे हॉर्स डैमेज होता तब उसको वो डैमेजेस नहीं पे करनी पड़ती. ये किसकी बात कर, बेलर की या बेली की? सर बेली की. बेली अगर खुद जा रहा है और वो एक शहर से दूसरे शहर की बात हो रही है, ले जाना था उसने, उस दौरान में अगर कोई जख्मी हो जाता है, कोई बात हो जाती है, तो उस हद तक भी जिम्मेदारी उसकी हमने सेक्शन 153 में हमने ऑलरेडी पढ़ ली है. लेकिन बात यह है कि यहाँ तो उसने एक और गड़बड़ कर ली है ना, और गड़बड़ ये की है कि वो दूसरे शहर में चला गया है जहाँ जाना था, तो अब उसकी डबल लाइबिलिटी हो गई ना, जिम्मेदारी उसने गलती पे गलती कर दी. ठीक है सर. Okay. Yes, sir. Now we'll go to, welcome beta. Now we'll go to section 154. अब section 154 क्या है? This is effect of mixture with bailor's consent of his goods with the bailee. अब mixture एक term इसने यूज की है, हम इसको देखते हैं कि section 155 इसको क्या डिफाइन करता है. 154 तो हमने देख लिया, 5 में आ जाते हैं. ये कहता है if the bailee with the consent of the bailor mixes the goods of the bailor with his own goods, the bailor and the bailee shall have an interest in proportion to their respective shares in the mixture thus produced. अब ये बात जरा डिफरेंट है, यहां घोड़ा नहीं है, यहां दूसरे गुड्स हैं. मैंने आपको दिया कि आप अपनी गंदम फसल से निकाली है, आप मार्केट लेके जा रहे हो, ये 50 बोरी गंदम मेरी भी अपने ट्रक में लोड कर लो. या मैंने आपको कहा कि ये 50 बोरी पड़ी है, आप ये ले जाइए मार्केट में सेल करके मुझे आके मेरे पैसे दे दीजिए. आपने क्या किया कि वो मेरी 50 बोरी भी उठा ली और जाके अपनी गंदम के साथ मिक्स कर ली. 100 बोरी आपकी थी, 50 मेरी हो गई और आप लेके मार्केट में चले गए. तो व्हाट यू डिड, यू मिक्स्ड माय गुड्स विद योर ओन गुड्स. लेकिन इस मिक्सचर में एक चीज मौजूद है कि मेरा कंसेंट शामिल है. I gave you my consent. Do you understand this? When I gave you my consent,
ऐसी सूरत में जब आप मार्केट में जाएंगे और उसको बेचेंगे तो व्हाट विल हैपन? सर मिक्स करने का कॉन्सेंट तो नहीं दिया था ना, जी लाइक आपको तो नहीं पता कि सर मिक्स करने का कॉन्सेंट तो नहीं दिया ना, आपको तो नहीं पता कि वो मिक्स कर देगा आगे जाके। नहीं, वो इजाजत ले लेता है आपसे, या आप उसे वैसे ही कह देते हो कि भाई मार्केट में बेच के इसे ला दो। आप इम्प्लाइडली कुछ भी नहीं बताते, मगर आप उसको रोकते भी नहीं है, मना भी नहीं करते कि मिक्स नहीं करना। तो जब आपकी खामोशी है तो खामोशी को भी नॉर्मली कंसेंट ही समझा जाता है। अगर उसने पूछ लिया तो बहुत अच्छा किया, नहीं पूछा तो उसने मिक्स कर लिया, लेकिन वो चला गया। ठीक है। अच्छा, अब इसको आप कह लें कि आप अप्लाइड कंसेंट है या इम्प्लाइड कंसेंट है, वट एवर इट वॉज, होगा क्या? व्हेन ही गोज इन द मार्केट, ही सेल्स ऑल द गुड्स, 150 बेल्स वो बेच देता है, 150 बैग्स ऑफ wheat. What will be done in this case? He will keep cost and share of his 100 bags, and he will give you the cost and share profits of 50 bags of mine to me, right? तो इसमें मेरा कंसेंट हो गया कि ठीक है, मेरा सामान ये ले गया, इसने मिक्स किया, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा सामान बेचा, इसने अपना भी बेचा। तो तमाम सामान में से जो प्रोपोर्शन मेरी बन रही है 1:3 रेशो की, 100 बैग उसका है और 50 बैग मेरा है, यानी 1/2 की रेशो, तो वो मेरे 50 बैग्स को उसने वापस कर दिया, कॉस्ट एज वेल एज द शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो दिस इज कॉल्ड अंडर सेक्शन 155 कि आपने उसको कंसेंट दे दिया मिक्सचर का। और इसमें यह आता है कि अगर आपने मिक्सचर का कंसेंट नहीं भी दिया तो भी इसे कंसेंट समझा जाएगा जब उससे अपने प्रोपोर्शन का शेयर लेने को तैयार हो जाएंगे। तो गॉट द पॉइंट? यस सर। अब आ जाता है कि इफेक्ट ऑफ द मिक्सचर विदाउट बेलर्स कंसेंट व्हेन गुड्स कैन बी सेपरेटेड। अब यहां दो कंडीशन है। आपको मैं ये बता दूं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरे लॉ के होराइजन में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट। इसमें बहुत बारीकी और छोटी छोटी बात को समझा जाता है। और हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे पाकिस्तान में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती टीचिंग में। नतीजा ये होता है कि हमने देखा है कि बहुत सीनियर वकला भी जब वो किसी जगह पे जाते हैं, कॉर्पोरेट साइड पे एंटर होते हैं, सिविल में एंटर होते हैं, कोई परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट्स के ऊपर काम करना पड़ जाता है, तो वो वहां मार खा जाते हैं। इसलिए आई एम एम्फसाइजिंग ऑन यू टू लर्न दिस वेरी वेरी डिलिजेंटली। नाउ द क्वेश्चन इज कि मिक्सचर 3 किस्म के आ गए। एक मिक्सचर वो है जो गुड्स अलग आपका कंसेंट से है, और एक मिक्सचर वो है जो आपके कंसेंट से नहीं है। लेकिन गुड्स आ गए 3 किस्म के, एक वो जो सेपरेट हो सकते हैं, एक वो जो सेपरेट नहीं हो सकते, और एक वो जिनके मुतालिक आप शनाख्त रख सकते हैं, जिनके मुतालिक शनाख्त नहीं रख सकते। तो हम जरा इनको देख लेते हैं। सेक्शन 156, इफ द बेली without the consent of the bailor mixes the goods of the bailor with his own goods, and the goods can be separated or divided. This is very important. Okay, he has done his mixed, but के बाद के जो sentence is very important. But or and the goods can be separated or divided. The property and the goods remain in the parties respectively. इसमें हम कह सकते हैं कि ये जो प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कंप्यूटर 20 कंप्यूटर दे दिए, 10 उसके हैं, 10 आपके हैं, तो वो सेपरेट किए जा सकते हैं। लिहाजा आपकी प्रॉपर्टी अपनी अपनी